The Mock Turtle's Song. Will you walk a little faster? Said a whiting to a snail. There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Will you, won't you join the dance? You can really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us with the lobsters out to sea. But the snail replied too far, and gave a look askance. Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Would not, could not join the dance. Would not, could not join the dance. What matters it how far we go? His scary friend replied, there is another shore, up on the other side, the further off from England, the nearer is to France. Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance. Will you, won't you, will you join the dance? Will you, won't you join the dance? So, my dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with the poem, The Mock Turtle's Song. I hope you would have enjoyed the lyrics of the song. So, it's a poem. It's an interesting poem, and the Mock Turtle is a fictional character devised by Lewis Carroll, the poet. This has been devised by Lewis Carroll from his popular 1865 book Alice Adventure in Wonderland, right? Its name is taken from a dish that was popular in the Victorian period, mock turtle soup, right? तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है. बेसिकली ये फिक्शनल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि एनिमल्स couldn't sing a song in reality. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक द मॉक टर्टल सॉन्ग है, एनिमल्स का सॉन्ग है, ये आपस में कुछ सॉन्ग गा रहे हैं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स गिवन ओवर इन द वर्ड्स टू नो बॉक्स. Askance, to look at someone with doubt or mistrust. It means किसी को इस तरह से देखना कि आपके उसके ऊपर एतमाद ना हो, ट्रस्ट ना हो, यानी शक की निगाह से देखना. Beloved, a much loved person, कोई बहुत ज्यादा महबूब हो, बहुत बहुत पसंदीदा शख्स. Notion is an idea, is a thinking. Porpoise is a sea-dwelling mammal closely related to dolphin. So it's a marine animal. It's a marine animal that is very much similar to a dolphin, as you can see here in this picture. So this is a porpoise. Then we have scaly, means covered in scales, the fish that is covered with scales. Shingle means small stones that form a beach. So basically the sand that is present on the shore, on the beach, on the seaside is called shingle. These are very small stones that are called bajri. ठीक है? And then we have a word whiting. It's a type of a fish, name of a fish. I have few more word meanings over here, so let's discuss them also. Mock means fake, copy something, not in real. Treading means stepping, किसी के ऊपर पाँव रख देना. Eagerly means impatiently, actively, बहुत ज़्यादा actively कोई चीज़ करना, energetic होगा. Advance means to move forward, proceed, आगे बढ़ना. Delightful means lovely, beautiful, बहुत ही खूबसूरत. Shore is beach or seaside, ठीक है, समंदर का किनारा. Further off, greater distance, एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस कंपैरिजन के अंदर होता है उसको कहते हैं further off. Too far means to behave in a way that upsets people or annoys people. एक ऐसा बिहेवियर जो लोगों को नाराज कर दे या उनको परेशान कर दे. Now it's time to move towards the explanation of the poem. Will you walk a little faster? Said a whiting to a snail. एक whiting fish है जो snail से कह रही है कि क्या तुम थोड़ा सा तेज चलोगे? There is a porpoise close behind us and he is treading on my tail. बिल्कुल मेरे पीछे एक डॉल्फिन जैसी एनिमल है और वो अपनी जो है वो
पाँव मेरे दुम के ऊपर रख रहा है, यानी वो तेजी से भागता हुआ आ रहा है, तो तुम थोड़ा सा तेज चल लो। सी हाउ ईगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल्स ऑल एडवांस। देखो जरा किस तरह से सारे के सारे जो टर्टल्स हैं और जो लॉबस्टर्स हैं वो कितनी तेजी से आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लॉबस्टर्स आर बेसिकली सॉर्ट ऑफ क्रैब्स, ठीक है, जो झींगे और केकड़े की नस्ल से एनिमल्स होते हैं उनको हम लॉबस्टर्स कहते हैं। दे आर वेटिंग ऑन द शिंगल, वो सारे के सारे बीच के ऊपर वेट कर रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन वो सारे बीच के ऊपर हैं, समंदर के अंदर नहीं है, मगर समंदर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं। विल यू कम एंड जॉइन द डांस। अब यहाँ पर ये उसको इनवाइट कर रही है कि आ जाओ तुम भी हमारे डांस का हिस्सा बनो। किसको? स्नेल को। और कौन उसको इनवाइट कर रही है? वाइटिंग एनिमल, दैट इज फिश। तो क्या कह रही है वो? क्या तुम आओगे या नहीं आओगे? आओगे या नहीं आओगे? क्या तुम आओगे हमारे साथ डांस में? इसी तरह रिपीट करती है इन्हीं वर्ड्स को। और दूसरी दफा में कहती है क्या तुम आओगे, नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे, नहीं आओगे हमारे साथ डांस में, ठीक है। उसको यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर? यू कैन रियली हैव नो नोशन हाउ डिलाइटफुल इट विल बी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना हसीन और कितना खूबसूरत एक एक्सपीरियंस होता है, कितना खूबसूरत एक एहसास होता है ये। When they take us up and throw us with the lobster out to sea, जब वो हमें ऊपर उठाते हैं और फेंकते हैं लॉबस्टर्स के साथ समंदर के ऊपर। कौन फेंकते हैं? जब एक दूसरे को हम फेंक रहे होते हैं और हम एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। बट द स्नेल रिप्लाइड टू फॉर, टू फॉर, नहीं नहीं ये बहुत खतरनाक बात है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। एंड गेव अ लुक एस्कैंस, और उसको शक की निगाह से देखता है वाइटिंग को कि जो कुछ वो कह रही है उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। सर ही थैंक द वाइटिंग काइंडली, वो कहता है कि वो दिल से शुक्रगुजार है वाइटिंग का। बट ही वुड नॉट जॉइन द डांस, वो यहाँ पर उसकी इनविटेशन को ठुकरा देता है कि नहीं मैं डांस को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। वुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट जॉइन द डांस। नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता मैं डांस को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा डांस। What matters it how far we go? His scaly friend replied. His scaly friend कौन है? वही whiting, जो fish है वो कह रही है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कितनी दूर चले जाएं। There is another shore you know, तुम्हें पता है कि बिल्कुल इस समंदर के साथ दूसरे किनारे पर upon the other side, दूसरे किनारे पर एक और सी साइड है, एक और साहिल है। The further off from England, जितना ज्यादा दूर वो इंग्लैंड से है, the nearer is to France, उतना ही करीब वो फ्रांस के है। यानी इस पार इंग्लैंड है, उस पार फ्रांस है। देन टर्न नॉट पेल बेलव्ड स्नेल, यहाँ पर वो उसको दोबारा से प्रोवोक कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्नेल, बट कम एंड जॉइन द डांस, आओ हिम्मत करो और डांस को ज्वाइन करो। Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? This time again she is asking the same question कि क्या तुम आओगे और हमारे साथ इस डांस को join करोगे? And the same line is being repeated twice. So this is the poem written by Louis Carroll. Let's read something about the poet. Louis Carroll has born in 1832 and died in 1898. Wrote Alice's Adventures in Wonderland. It's a very interesting and very famous story. You people have watched the cartoons or films related to this story, and this poem appears in that story. So this story is related to this poem, and this poem is related to that story. Carroll wrote nonsense literature, poems and stories where strange and impossible things happen. Carroll was also a photographer and a mathematician. This was all about the poet. Okay, my dear students, it's time to discuss a question and answers given on page number 126. So open up exercise A, understanding the poem. Question number A says, who is invited to join the dance? So the answer is, the snail is invited to join the dance. Only you'll cut who and you'll place the snail in place of who, and the answer is similar to the question. The snail is invited to join the dance. Number B. List the 5 creatures named in the poem. Do you know what they all look like? Now we have to figure out all 5 creatures that poet has named in the poem, and we have to find out how they look alike.
So if you see in the second line we have a whiting fish, then snail. In line number 3 we have a porpoise. So these are 3 creatures. These all these are animals. And then we have lobster. Here we have a lobster and turtles. These are the 5 creatures that poet has covered in the poem. So the answer to part A and part B are given over here. You can write them in your notebooks. Then we have part C. Which character is referred to as his scaly friend? यहाँ पर जो character है his scaly friend poem के अंदर, उससे कौन मुराद है? So students, I told you earlier, it means the whiting fish. You will write the answer as the whiting is referred to as his scaly friend. This is the answer to part C. Then we have part D. How many questions does the whiting ask the snail? We have to count the number of questions that whiting has asked the snail. Let's count them. So number 1 is, will you walk a little faster? This is the question 1. Then number 2, will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Number 3, will you, won't you, will you, won't you join the dance? Then number 4, they are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? These are 4 questions. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, and then the rest of the 3 questions in the last stanza. Number 5, what matters it how far we go? And number 6 is, will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? Number 7, will you, won't you, will you, won't you join the dance? So in total, we have 7 questions that have been asked by whiting to a snail. It's very simple. You will only write 7. Then we have 2 a bit difficult questions. Part E says, what does the dance involve? Dance में क्या था? किस तरह का dance था ये? So you'll get the answer in stanza number 2, line number 3. When they take us up and throw us with the lobster out to sea. This was basically the dance that was discussed in the poem. So we are going to write the answer as, the dance involves taking them up and throwing them out to sea. डांस के अंदर क्या था? उनको पकड़ के और हवा में उछाल देते थे समंदर के अंदर. Last but not the least, part F says, what is meant by turn not pale? इसका क्या मतलब है turn not pale? पीले मत पड़ जाओ. So my dear students, it simply means don't be frightened, कि घबराओ मत, खौफज़दा मत हो जाओ. So my dear students, here the explanation and the exercise has all been completed. I hope you liked the video. Please subscribe to the channel if you are new and press the bell icon. Don't forget that. And thanks for watching the video. Take care. Allah Hafiz.